Good morning, students. Myself, Ashwini, and our today's topic is pollination and double fertilization in flowering plants. So, students, according to definition, pollination is transfer of pollen grains from the anther to stigma of a flower. This is a male sex organ and this is an anther. So, when pollen grains are going from anther to stigma, then that is called pollination. So what is written in next line, that pollen grains are immobile, means they cannot move from one place to another place. They cannot reach the stigma by themselves. An external agent is required for this. It can be either wind, water, animal, gravity or growth contact. So क्या definition है pollination का? The process of transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower. Now students, there are two types of pollinations. First is self-pollination and second is cross-pollination. So let us see in next slides that what is the difference between self-pollination and cross-pollination. So first of all, students, self-pollination. Self-pollination is transfer of pollen grains from the anther to stigma of the same flower or another flower of same plant. Let us understand from the diagram. In the first case, you are observing that the pollen grain from the anther of same flower are going to stigma of same flower. But in other diagram, what are we observing? That pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower growing on the same plant are moving. So what does it mean? That self-pollination, what happens in self-pollination? Either transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower, or either transfer of pollen grains from anther to the stigma of another flower born on same plant. तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? या तो pollen grain अपने ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा, या it will go from the anther of one flower to the stigma of another flower belonging to same plant. So this is self-pollination. So now students, let's define cross-pollination. Cross-pollination is transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower of different plant belonging to same species. Pollen grain एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएंगे which is belonging to same species. Here in the diagram we can understand, suppose this is a diagram of the flower which is born on one plant. So from here pollen grain will go to the flower, another flower which is born on another plant, but species क्या होगा? दोनों का same होगा. जबकि so self pollination और क्रॉस pollination में क्या डिफरेंस है? सेल्फ pollination में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain within a same flower or between two different flower born on the same plant. But cross pollination में क्या होता है? Transfer of pollen grain from one plant to another plant belonging to same species. So now let us differentiate between self pollination and cross pollination. So first point, it is a transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower or another flower born on the same plant. It's a definition. Cross pollination में क्या है? It is a transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower born on different plant of same species. Next point बच्चों, it does not require any external agency. Self pollination में कोई wind, water, insects की जरूरत नहीं पड़ती, because both the anther as well as stigma are present on the same flower or on the same plant. But दूसरी तरफ बेटे, an external agent is always required. That may be in the form of wind, water or insects. What difference? Both anthers and stigma mature at same time. दोनों ही anther और stigma एक ही समय पे mature होते हैं. पर इस तरफ क्या होता है? Anther and stigma mature at different time. दोनों अलग अलग टाइम पे mature होंगे. Next, it can occur even when the flower is closed. ये तब भी होगी जब flower बंद है. But cross pollination कब होगा? When flower is open. Then only the pollen grain can go outside with the help of pollinating agent. Next students, produces homozygous offsprings, because एक ही plant या एक ही flower से आएंगे character, तो जो offsprings होंगे they will be homozygous. But यहाँ पर क्या होगा? Produces heterozygous offspring, because characters are coming from two different parents. So heterozygous offspring बनेंगे क्योंकि character दो अलग अलग parents से आ रहे हैं. Last,
डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशंस, और इधर लिखेंगे इंट्रोड्यूस वेरिएशंस। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो वेरिएशंस होती हैं वो नहीं आती हैं, ना के बराबर होती हैं, whereas in क्रॉस पॉलिनेशन there are lot of variations which helps for the survival of plant species. So this is all about difference between self pollination and cross pollination. Now students, next topic is double fertilization. So after pollination student, now the pollen grains are on the stigmatic surface. So stigmatic surface पे क्या होगा बेटे, पहले there will be pollen germination, और pollen germination में क्या होता है, जो भी pollen grain यहाँ पर आएंगे उनमें से any one pollen grain will grow a pollen tube. ये जो अंदर ट्यूब सी नजर आ रही है दिस इज अ pollen tube. सो pollen tube की ग्रोथ होगी, पहले पहले pollen germinate करेगा स्टिग्मेटिक सरफेस पे, फिर क्या होगा, when this pollen tube will grow, this will move through style downward, ये धीरे धीरे स्टाइल के थ्रू अंदर जाएगी, और फाइनली फिर ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएगी। एंड व्हाट इट इज ब्रिंगिंग अलोंग विद इट, इसके साथ ये क्या लेके आ रही है, टू मेल गैमीट। मैंने पिछले डिस्कशन में आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट होते हैं, दो मेल गैमीट। तो वो मेल गैमीट क्या करेंगे, इस पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदर आएंगे। तो पॉलिनेशन की एकदम बात पहले क्या होती है, पॉलन जर्मिनेशन, जिसमें क्या करेगा, ग्रोथ होगा पॉलन ट्यूब का, धीरे धीरे पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी स्टाइल के थ्रू, और फाइनली इट एंटर इनटू द ओव्यूल, और साथ में क्या लेके आएगी, टू मेल गैमीट्स। तो ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, ग्रोथ ऑफ पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनसीईआरटी का, तो ये आपने ड्रॉ भी करना है, असाइनमेंट में ऑलरेडी इसका क्वेश्चन है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ इट इन योर फेयर नोटबुक्स। अब थ्योरी पार्ट देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। सो आफ्टर लैंडिंग ऑन रिसेप्टिव स्टिग्मा, a pollen grain produces a pollen tube that extends between the cells of the style toward the ovary. यही बात लिखी है जो मैंने बताई। So double fertilization results from the discharge of two sperm, male gametes भी कह सकते हैं इनको, from the pollen tube into the embryo sac in the ovule. Embryo sac के बारे में हम बात कर चुके हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। तो डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स क्या करती है, फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ टू मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब लेके आई है इनटू द एम्ब्रियो सैक। अब क्या होगा, पहला मेल गैमेट क्या करेगा बेटे, एग के साथ फर्टिलाइज करेगा। मैंने लास्ट टाइम दो स्ट्रक्चर याद रखने को कहा था, एक फीमेल जर्म सेल और एग सेल, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस जो पोलर न्यूक्लियर के कारण बनता है। यहाँ पर पोलर न्यूक्लियर लिखा है, लेकिन पोलर न्यूक्लियर जब फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो पहला मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा, जो बाद में एम्ब्रियो बनाएगा। जबकि दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियर, तो क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। So one sperm fertilizes the egg and other combines with the polar nuclei, giving rise to a triploid food storing endosperm. बेटे एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, ये फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। जो जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, तो उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट कहाँ से आएगा, इस एंडोस्पर्म से ही आएगा। एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेके जाइगोट फाइनली एम्ब्रियो में चेंज होगा, और फिर वो एम्ब्रियो आगे चल के नया प्लांट बनाएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है, दो मेल गैमीट्स हैं, एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगा और एक पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, तो एक जाइगोट बनाएगा जो बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और दूसरा क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, एम्ब्रियो को, जिसके थ्रू एम्ब्रियो फर्दर ग्रो करेगा इनटू न्यू प्लांट। दिस इज ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। अगली स्लाइड में हम डिटेल में इसकी थ्योरी देखते हैं, इसकी डबल फर्टिलाइजेशन की। So now students, let's see the theory part of double fertilization. Double fertilization is a characteristic feature of all flowering plants or angiosperms. In double fertilization, plant undergo following two fertilization. दो fertilization होती हैं। पहला generative fertilization. Generative fertilization में क्या होगा? This fertilization involve fusion of first male gamete with the female gamete to form zygote, which later on changes into embryo. Generative fertilization में जो मेल गैमीट होगा पहला, वो फीमेल गैमीट या एक्सेल के साथ फ्यूज करेगा, जिससे जाइगोट बनेगा जो बाद में एम्ब्रियो में चेंज होगा। इन वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, इस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, दिस फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमीट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म व्हिच इज रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कह सकते हैं। तो पहली फर्टिलाइजेशन में क्या बना आपका, जाइगोट बना जो बाद में एम्ब्रियो में चेंज होगा, और दूसरी फर्टिलाइजेशन में बनेगा एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या है, इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो यही सब कुछ था बेटे इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हमने
डिटेल में डिस्कस किया कि पॉलिनेशन क्या होती है और पॉलन जर्मिनेशन क्या होती है, और बाद में फाइनली हमने डिस्कस किया डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, विच इज अ वेरी वेरी यूनिक फीचर ऑफ ऑल एंजियोस्पर्म्स, जिसमें क्या होता है, दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और एक वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। विद दिस स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था हमारा वीडियो लेक्चर वो खत्म होता है। टेक केयर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।